फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं. स्टेटमेंट, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. Statement 2, carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave radiation. तो पहला स्टेटमेंट गलत है, because terrestrial radiation is more responsible for atmosphere heating. So D is the correct answer. Then 52nd, statement 1, thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to poles. Second statement, at the equator, heat is transported to greater heights by strong convectional current. So A is the correct answer. This is a moderate question. Then 53rd, consider the following. How many of the above are products of volcanic eruption? तो इसको हम easy question में count कर सकते हैं. All four are correct. Pyroelastic debris, ash, dust, nitrogen compounds, sulfur compounds, सारे सही. 54th, which of the following are correct inference from isothermal maps in the month of January? So A is the correct answer. The isotherms deviate to the north over the ocean and to the south over the continent. The presence of the cold ocean currents, Gulf Stream and North Atlantic drift make the North Atlantic Ocean colder. So ये warmer होगा because in NCERT it is given warmer. So 1 is correct, 2 is incorrect. 55th, which of the following countries are well known as the two largest cocoa producer in the world? This is an easy question. ये काफी news में था cocoa. So C is the correct answer. Next is 56th question. This is a moderate question. With reference to the Himalayan rivers joining the Ganga downstream of Prayagraj from the west to east, which one of the following sequences is correct? So the correct is B, Gomti, Ghagra, Gandak and Kosi. This is a moderate question. 57. This is also a moderate question. Statement 1, rainfall is one of the reasons for weathering of rocks. It is correct. Statement 2, rainwater contains carbon dioxide in solution. It is correct. Third, rainwater contains atmospheric oxygen. It is also correct. So answer of 57 is B. Both statement 2 and 3 are correct, but only one of them explains statement 1. Next is the 58th question, and this is also a moderate question. So how many of the above countries have a border with the North Sea? Finland, Germany, Norway and Russia. So the answer is B, only 2. So only Germany and Norway have the boundaries. Finland and Russia do not have the boundary. Next is 59th question. That is a tough question. Waterfall, region and river. So first is Dhuandar. It is on Narmada river but not in the Malwa Plateau region. Second is Hundru. That is Chota Nagpur, Subarnekha. So that is correct. Third is with respect to Jerosapa. It is also called Jog Falls, and it is in Western Ghats but not on Netravati but Sravasti river. So the correct answer of this is A, only 1. 60. This is also a tough question. Answer is B, only 3 and 4 are correct. So Central Asian Vosges and Fold Mountain is Block Mountain. Second is Europe, Alps, Block Mountain. So this is wrong. Third is North America, that is a Fold Mountain. And fourth is South America, Ants, that is a Fold Mountain, that are correct. Then 61st question, the organisms cicada, froghopper and pond skaters are, this can be considered to be a moderate question, but अगर आप थोड़ा आइडिया तो फ्रॉग ग्रास हॉपर से मिलता जुलता है तो ये इंसेक्ट हो जाएगा आपका. 61 का C moderate question है. 62nd, many chewing gums found in the market are considered a source of environmental pollution. पॉसिबिलिटी है. Many chewing gums contain plastic as gum base. अगर आपने मतलब सभी लोगों ने खाया ही होगा तो आइडिया लगा ही होगा कि थोड़ा प्लास्टिक सा फील होता है. पहला सही है और सेकंड जो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. देन 63rd क्वेश्चन, ये इसको आप टफ कंसीडर करेंगे. ब्राजील, देन एनिमल फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट. तो ब्राजील का इंग्री दे रखा है, इंडोनेशिया का एल्क एंड मेडागास्कर का बोनोबो. 63rd, इसके जो है कोई भी ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है. ठीक है. Then 64th, consider the following statement regarding World Toilet Organization. It is one of the agencies of United Nations. Then World Toilet Summit, World Toilet Day and World Toilet College are the initiatives of this organization to inspire action to tackle the global sanitation crisis. The main focus of its function is to grant funds
to the least developed country and developing countries to achieve the end of opendification. ये आपको आइडिया होगा, ये क्वेश्चन को आप मॉडरेट कंसिडर करेंगे. फर्स्ट जो है करेक्ट इनकरेक्ट है, यूएन का पार्ट नहीं, यूएन का एजेंसी नहीं है ये. सेकंड सीम्स टू बी करेक्ट, ये काफी अवेयरनेस वगैरह काम करता है, ये आपके स्कीम्स वगैरह में करंट अफेयर्स में कवर था. थर्ड जो है फंड ग्रांट नहीं करेगा, ये ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. 65th क्वेश्चन, पास्ट में एलिफेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है. 65th क्वेश्चन को आप मॉडरेट में कंसिडर करेंगे. Lions do not have a particular breeding season, seems to be correct. Unlike most other big cats, cheetahs do not roar. ये भी सही है, काफी न्यूज में था ये. फिर unlike male lions, male leopards do not proclaim their territory by scent marking. ये गलत है, ये वो भी ऐसा करते हैं. तो 1 and 2 is the only correct answer. Third is wrong. And moving forward to the 66th question, which one of the following is correct description of 600 million farmers? Again न्यूज वाली चीज है ये, but it seems to be on moderate to difficult. आपका इसका आंसर जो है फर्स्ट है. इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो, नेचर पॉजिटिव एंड एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस. आपका 66 का ए है. देन मूविंग टू द 67th क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द एबव आर कंसीडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज. नाम से पता चलता है थोड़ा डिसेंट्रलाइज नेचर होना चाहिए. ऑल फोर इज करेक्ट. आप इसको इजी कंसीडर करेंगे, और नाम से पता चल रहा था डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड वाली चीज. 1068, ये दिस सीम्स टू बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन. Which one of the following shows a unique relationship with an insect that has co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree? Answer is fig. वैसे भी महुआ और सैंडलवुड मैक्सिमम लोगों ने एलिमिनेट कर लिया होगा, फिग और सिल्क कॉटन में आप चांस ले सकते थे. Then 69th, butterflies, fish, frogs, how many of the above have poisonous species among them? Really easy question. ये आप सभी का सही हुआ होगा hopefully. All three, मतलब पॉसिबिलिटी है सबका ही कोई ना कोई poisonous species होता है. And consider the following. 70th क्वेश्चन को आप देखिए. How many of the above trees are actually native to India? Cashew, papaya, red sanders. Cashew और papaya ये जो है इंडिया के नेटिव नहीं है. होपफुली आप सभी लोगों को ये पता था. रेड सैंडर्स आपको पता होगा, रक्तचंदन हमारे यहाँ पूजा पाठ में भी यूज होता है, तो ये हमारे यहाँ का है, तो इसका ओनली 1 होगा. ये से आप मॉडरेट क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं. Then moving on to the next question. Okay, so 71st question. Consider the following airports. 1. Doni Polo Airport. 2nd. Kushinagar International Airport. 3rd. Vijayawada International Airport. So in the recent past, which of the above have been constructed as greenfield projects? So this is a moderate question, and the correct answer is A, 1 and 2. 72nd question. So this is an easy question. With reference to water vapor, which of the following statements are correct? So first is it is a gas, the amount of which decreases with altitude. Second, its percentage is maximum at the poles. So answer is A, its percentage is maximum at the equators. 73rd, this is moderate question, and the options are 1. Annual and daily range of temperature is low. Precipitation occurs throughout the year. Precipitation varies between 50 centimeter and 250 centimeter. And the correct answer is D. That is marine west coast climate. 74. You can consider it as easy to moderate. With reference to Coriolis force, which of the following statements are correct? First, it increases with increase in wind velocity, so that is correct. Second, it is maximum at the pole and it is absent at the equator. So that is also correct. Next, 75th. On June 21 every year, which of the following latitude experience a sunlight of more than 12 hours? So that is a tough question. Options are equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, and Arctic Circle. The correct answer is D, 2 and 4. 76. One of the following regions has the world's largest tropical peatland, which holds about 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which one of the following denotes that region? So the correct answer is B, Congo Basin. Next, we can move to the 77th question. It is a moderate question. With reference to the perfluoroalkyl and perfluoroalkyl substances PFAS that are used in making many consumer products, consider the following statements. So the answer is D, 1, 2 and 3 all are correct. PFAS are found to be widespread in drinking water, food and food packaging materials. PFAS are not easily degraded in the environment. Persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal bodies.
Next is 78. That is a tough question. Parastoid species are found in how many of the above kind of organisms? So the correct answer is B, only 3. So it is found in 1, 3, and 5. Carbide, beetles, flies, and wasps. Next is 78. It is also a tough question. Consider 79. It is a moderate question. So consider the following plants: groundnut, horse gum, and soybean. How many of the above belong to the pea family? So the correct answer is C. All of them belong to the pea family. 80. So this is a moderate question. Statement 1. The Indian flying fox is placed under the vermin category in the Wildlife Protection Act 1972. The Indian flying fox feeds on the blood of other animals. So that is wrong. So if 2 is wrong, the answer is C. And moving forward to the next question, 81st. The total fertility rate in an economy is, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन आपसे कहेंगे, सभी के लिए इजी रहा होगा ये. 81st का जो आपका आंसर रहेगा डी रहेगा. द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग एज. देन 82nd क्वेश्चन, ये आपका मॉडरेट क्वेश्चन है. In India, non-banking financial companies can access the liquidity adjustment facility window of the Reserve Bank of India. In India, foreign institutional investors can hold the government security GSECs. In India, stock exchanges can offer separate trading platform for debt. तो आपका 82nd का जो आंसर है डी है. फर्स्ट इज रॉन्ग, एनबीएफसीज को एक्सेस नहीं है. सेकंड थर्ड इज करेक्ट. ठीक है, ये आप इसको मॉडरेट को टफ में काउंट करेंगे. 82nd 83rd. In India, which of the following can trade in corporate bonds and government securities? इसे आप इजी टू मॉडरेट में काउंट कर लीजिए. इसमें ट्रेड जो आप कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, तो सारे ही कर सकते हैं ट्रेड. कंसिडर द फॉलोइंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मोटर व्हीकल्स, करेंसी स्वैप. इनमें से कह रहा है विच ऑफ द above are considered फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में से कौन सा है? ये क्वेश्चन आपका मॉडरेट है. पहला और तीसरा जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. डी है इसका 84th का आंसर. देन 85th पे चलेंगे. 85th आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा, और उसको डाउटफुल में काउंट करके चलिएगा, मतलब ऑप्शन के आंसर्स के वेरी होने के चांसेस हैं इसमें. 85th का जो आपका आंसर है वो 85th का आंसर हम ओनली 2 कंसिडर करके चल रहे हैं. डेयरी फार्म जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी में आता है, और वीविंग क्लॉथ जो है सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है. फर्स्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट. ठीक है. देन 86th. कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स: एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, corn, grain, wastewater treatment sludge, wood, mill waste. Which of the above can be used as feedstock for producing sustainable aviation fuel? 86. इसको आप इजी कंसिडर कर सकते हैं, और इसका आंसर आपका ऑल है, सारे ही इसमें सही है. एंड 87th क्वेश्चन, 87th को आप मॉडरेट टू डिफिकल्ट कंसिडर कर सकते हैं. With reference to physical capital in Indian economy, consider the following pairs: farmers plus working capital, कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल, यार्न यूज्ड बाय द वीवर फिक्स्ड कैपिटल, पेट्रोल जो है वर्किंग कैपिटल. इसमें से आपका सेकंड और फोर्थ जो है वो करेक्ट है. आपका ओनली 2 आंसर रहेगा. देन 88. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड phrases is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual words that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over virtual items? अगर आपने थोड़ा बहुत भी न्यूज़ फॉलो किया होगा, यू विल बी नोइंग कि इसका आंसर आपका 88 का सी होगा. इसको आप इजी कंसीडर करके चल सकते हैं. एंड 89th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द रूल्स imposed by Reserve Bank of India while treating foreign banks, consider the following statements. There is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiaries in India. एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होता ही है. और होली owned banking subsidiaries in India, at least 50% of the board members should be in international. ये करेक्ट है. मे बी कोई आपको डाउट रहे, इससे आप इसको मॉडरेट काउंट करेंगे. फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट. 89th का आपका आंसर है बी. With reference to corporate social responsibility (CSR) rules in India, consider the following statements. CSR rules specify that expenditure that benefits the company directly or its employees will not be considered as CSR activities. लॉजिकली आप कंक्लूड कर सकते हैं, वरना वो अपने पे ही यूज कर लेंगे. और CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज. स्पेसिफाई करता है 2%, अगर आप लोगों को याद होगा तो. ठीक है. तो 90th का जो आपका आंसर है वो है ए, सही है. वन ओनली, सेकंड इज इनकरेक्ट. इसे आप इजी टू मॉडरेट काउंट कर सकते हैं. So 91st question,
you can count it as moderate. With reference to radioisotope thermoelectric generators, consider the following statements. The first is that RTDs are miniature fission reactor. It is wrong. 2 and 3 are correct, and therefore it is B. 92nd. Consider the following statement. Statement 1. Giant stars live much longer than dwarf stars. It is wrong. So if it is wrong, then answer is D. It is a moderate level question. So statement 2 is compared to dwarf stars, giant stars have a greater rate of nuclear reaction. That is correct. So 93rd is a tough question. And which one of the following is synthesized in human body that dilates blood vessels and increases blood flow? So A, nitric oxide is the correct answer. 94th, it is a moderate question. In how many of the above activities can the radars be used? So first, identification of narcotics on passengers at airports or in aircraft. Second, monitoring of precipitation. Third is tracking the migrants of animals. So B, 2 and 3 are only correct, only 2. Then moving to the 95th question, consider the following aircraft. How many of the above are considered with generation, the 5th generation fighter aircraft? It is easy question, moderate to easy, and the answer is none because all of them are not of 5th generation. 96th, again it is an easy question. In which of the following are hydrogels used? So you can count easy to moderate. So controlled drug delivery in patients, mobile air conditioning systems, precipitation of industrial lubricants. So all three are correct. 97th, which one of the following is the exhaust pipe emission from fuel cell electric vehicle powered by hydrogel? Moderate question. D, water vapor is the correct answer. 98 is also a moderate question. Recently, the term pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of which one of the following? So answer is C, long duration energy storage. 99, easy question. Membrane bioreactors are often discussed in the context of, so D, waste water treatment technology. Membrane से आप पता कर सकते थे कि waste water की बात हो रही है. Then 100, with reference to the Indian economy, collateral borrowing and lending obligations are the instruments of, so it is moderate to tough, and the answer is money market C option. सो आपका डिस्कशन खत्म हो गया. आप लोगों का अगर कोई डाउट है या किसी क्वेश्चन पे लग रहा है कि आंसर की गलत है तो बताइएगा. ये आपका GS1 का आंसर की हो गया. वी बिलीव कि इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है गलतियां होने की, बट ज़्यादा नहीं गलतियां होनी चाहिए. मे बी सिंगल डिजिट में कोई क्वेश्चन गलत होगा तो होगा. एंड वी एट CSE नाउ वी बिलीव कि कट ऑफ जो है लास्ट ईयर से इट विल गो हायर. एग्जैक्ट कट ऑफ को हम प्रेडिक्ट करेंगे इन सम डेज. लास्ट 2 टाइम्स हमने प्रेडिक्ट किया है और एकदम क्लोज प्रेडिक्ट किया है. आप हमारे सोशियोलॉजी करंट अफेयर्स पे जाके चेक कर सकते हैं, हमने प्रेडिक्ट किया हुआ है. इस बार जस्ट टू इन्फॉर्म यू ऑल कि हम लोगों ने CSE नाउ पे जो है 2024 के लिए हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे 24/7 एक्सेस रहेगा मेंटर्स का जो खुद इवेल्युएट करेंगे और आपसे डायरेक्टली बात करेंगे जब भी आप बात करना चाहें. तो ये मेंस के मेंटरशिप रहेगा. सिमिलरली हम 2025 के लिए प्रीलिम्स कम मेंस इंटीग्रेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं, जहाँ पे अगेन 2 मेंटर्स जो हम दोनों हैं, हम दोनों अवेलेबल रहेंगे सभी के लिए, 24/7 अवेलेबल रहेंगे. और हर चीज़ जो है खुद हम मैनेज करेंगे, किसी और को आउटसोर्स नहीं किया जाएगा. सो दैट लिमिटेड लोगों को हम इनरोल करेंगे और क्वालिटी मेंटेन की जाएगी. ठीक है. फिलहाल आप लोगों से यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि रेस्ट कीजिए और 2-3 दिन 4 दिन का ब्रेक लीजिए, रिलैक्स कीजिए और अगेन वापस से अगर होपफुली आप क्लियर कर रहे हैं तो मेंस के लिए लग जाइए.